सबसे पहले हमने इस यूनिट के अंदर किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. Then we discussed about how these subatomic particles are arranged into the atom. That is Thomson model of atom. फिर हमने किया रदरफोर्ड scattering experiment, and on the basis of his scattering experiment, we discuss about the Rutherford atomic model. Now we are going to tell that then we discuss development leading to the discovery of Bohr's model of atom, that is electromagnetic wave theory, Planck's quantum theory. After that we discuss Bohr's model of atom. Bohr's model of atom के बाद हमने spectrum of hydrogen atom जो है वो explain किया. Then we discuss about the limitation of Bohr atomic model. After that we discuss about the phenomena which lead to the formation of quantum mechanical model of atom. फिर हमने जो है quantum mechanical model of atom किस तरह से डिस्कवर हुआ उसके बारे में डिस्कस किया भी. वहां पर हमारे पास जो है वो दो फेनोमेना हमने डिस्कस किए थे. एक था भी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और दूसरा हमने डिस्कस किया था हीजनबर्ग अनस्टेंटी प्रिंसिपल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. आज हम जो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है आपको? Quantum mechanical model of atom is based upon Schrödinger wave equation. पहले तो हमने समझना है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है. हमने मैकेनिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक तो है क्लासिक मैकेनिक्स which based upon Newtonian law of motion. Newtonian law of motion जो न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बेस्ड है वो होगी क्लासिकल मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स which takes into consideration dual nature of matter. जो मैटर के ड्यूअल नेचर को कंसिडर करती है. मैटर behave like a wave as well as a particle. मैटर जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा. The heart of quantum mechanics is a Schrödinger wave equation. जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है it based upon Schrödinger wave equation. अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्या, पहले हम इसको समझें भी. द इक्वेशन इज सिग्मा स्क्वायर शाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर शाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर शाई अपॉन सिग्मा जेड
स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दिस इक्वेशन इज नेम्ड एज ए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। यहां पर psi इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव की एम्पलीट्यूड है भाई। m is the mass of electron, h Planck's constant, E is total energy of the electron, V is a potential energy of electron। V जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। x, y, z आर द कोऑर्डिनेट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी गिवन ऑन x एक्सिस एंड दिस इज ऑन y एंड दिस इज ऑन ए z एक्सिस। बाय सॉल्विंग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन we can find out the energy of a electron in a particular orbital, and psi is amplitude which can also be calculated by the solution of Schrodinger wave equation। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, this psi amplitude of electronic wave has any physical significance? क्या इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? psi do not have any physical significance, but square of this can give the probability or intensity of electronic wave at a point, as sound or light। साउंड और लाइट की एम्पलीट्यूड का अगर हम स्केयर कर दें, देन इट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाइट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है साउंड की और लाइट की। उसी प्रकार से psi स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव is give the intensity of electronic wave at a particular point. So in this way you can find out the electronic cloud। आप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फाइंड आउट कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ कहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। We cannot say with certainty अकॉर्डिंग टू हिल्सनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम सर्टेनली ये कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। इफ वी कंसिडर देम, तो हम उसकी पोजीशन को सर्टेनिटी से नहीं बता पा रहे। पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ सर्टेनिटी से कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर हम उसकी केवल प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो ये जो है यहां पर इवॉल्व होके आया एक नया कंसेप्ट, दैट इज एटॉमिक
the region around the nucleus where probability of finding electron of particular energy is a maximum. पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो अप टू 90%. दैट रीजन और स्पेस इज नोन एज ए एटॉमिक ऑर्बिटल. ये रीजन और स्पेस आपका जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट some characteristics of quantum mechanical model of a atom. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम has quantized value of energy. The electron in an atom has quantized value of energy. जो इलेक्ट्रॉन होगा एटम में उसकी वैल्यू क्वांटाइज फॉर्म में होगी, जिसको हम बोहर्स मॉडल में पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द की कंसेप्ट ऑफ बोहर मॉडल. दूसरा जो है हमारे पास दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर बनाते हैं, दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी can be calculated with the help of Schrödinger wave equation. इन वैल्यू को हम Schrödinger wave equation की सॉल्यूशन से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं. The value of psi can also be calculated from Schrödinger wave equation. हम psi की वैल्यू भी Schrödinger wave equation के सॉल्यूशन से जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. अब ये कहता है by finding the psi sphere we can find out the electron density around the nucleus. By finding psi sphere we can find electron density of a particular energy can be calculated जिससे हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का पता चलता है. मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड ए एटम कैन हैव many value of psi. किसी भी एटम में psi की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है. सो इट कैन हैव many ऑर्बिटल. इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं. अब ये क्या करता है बच्चे कि भी किसी भी एटम
एटम के अंदर शाई की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, इसलिए हम इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऑर्बिटल जो है वो पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शाई हैव ऑल द information about electron and quantum mechanics help to deduce them। क्वांटम मैकेनिक्स हमारी हेल्प करती है उन इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। This is postulate of a quantum mechanical model of a atom। जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए, then the value of E is find out is known as आइन वैल्यू। जो E की वैल्यू आई उसको आइन वैल्यू, और शाई की जो वैल्यू आई उनको हम आइन फंक्शन के नाम से जानते हैं। आइन वैल्यू और आइन फंक्शन। वैल्यू ऑफ E एनर्जी बाय सॉल्विंग द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम is known as ion values, and value of psi for this ion value is known as ion function। इसको हम जो है ion function के नाम से जानते हैं। This is all about the quantum mechanical model of a atom। Tomorrow we will discuss about the quantum numbers।